Hello, everyone, and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let's talk about gender and disability. This is another important topic for your M.Ed program, right? Third semester, last paper, paper 12, gender education and development. So here is gender and disability, right? So we should know about, सबसे पहले पता होना चाहिए disability क्या है. Disability क्या होती है? You know very well. Disability मतलब चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली है, जब हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंगली जो हमारा स्टेटस होना चाहिए मेंटल का, मेंटल लेवल का, जो फिजिकली हम फिट होने चाहिए, राइट, वी शुड हैव ऑल द organs working properly, right, so we are able. जब उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम होती है then we are considered disabled. तो वो कहाँ आता है? डिसेबिलिटी में. तो डिसेबिलिटी हम यहाँ एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस हियर, राइट. Let's straight move on to disability. Disability is a state or the condition of the mind or the body that affects an individual's functioning and interferes with the ability to participate in the activities of day-to-day life. Right? So, ये हमारे हो गई ये disability. As we have mentioned above, disability is not just an individual medical problem but a social one. कि हम हमारी जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है. वी आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटीज एज अदर्स, राइट. सो दैट इज कंसिडर द कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी, राइट. इसमें आप कुछ एक एग्जांपल्स दे सकते हैं, पूरा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें. आई मीन इम्पेयरमेंट है विजन का, हियरिंग का, राइट. सो वॉकिंग का, आई मीन दैट इज देयर. अभी हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं? जेंडर एंड डिसेबिलिटी. कि एक तो जो वुमेन है, लड़की है, उसका बर्थ ही हमारी सोसाइटी में, कल्चर में वेलकम नहीं है, और ऊपर से अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी भी हो, राइट, अलोंग विद द डिसेबिलिटी, तो उसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है ये सोसाइटी, ये एनवायरमेंट, ये हमारा जो कल्चर, ओके, एक्सेप्ट नहीं करता है. कहते हैं एक तो लड़की और ऊपर से विद डिसेबिलिटी, राइट. सो ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे ऐसे कटाक्ष जो लोग हैं वो ऐसे शेयर करते हैं उनके साथ, अपने बच्चों के, लड़कियों के साथ. तो ये सब चीजें हमारे एनवायरमेंट में है, तो इसके ऊपर आपको लिखना है, राइट. एज डिसेबिलिटी का तो आपने इतना बता दिया कि डिसेबिलिटी क्या होती है. डिसेबल्ड पर्सन से डिफर फ्रॉम अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर टाइप एंड द डिग्री ऑफ द डिसेबिलिटी. अलग अलग हो सकती है, जेंडर की, कास्ट की, कास्ट, रेस, सेक्सुअलिटी, रेजिडेंस, or other social, economic, political, cultural factors, right. How disability is experienced and understood. ये disability तो हो गई, disability को experience क्या किया जाता है in context with हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, जो डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ में इसको कंसिडर किया जाता है, राइट. अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हु कैन डू farm work may be considered disabled at all, but may be teased for being a simple son, कि a simple person है, उसको भी tease किया जाता है कि ये intellectual है but still the person is doing that. But in the urban society, having an intellectual disability or mental retardation, as it is still known in India, may be more of a problem because of so much importance is given to the academic performance and getting into the profession. But what is a disability? And what does it mean to be disabled in the first place? Disabilities may be present from birth. फॉर इंस्टेंट किसी के साथ वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, बर्थ के टाइम पर ही होती हैं, या डेवलपमेंट के टाइम पर होती है, बचपन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो डिसेबिलिटी, कुछ फिजिकली, कोई मेंटल रिटार्डेशन, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई, राइट. तो डिसेबिलिटी में बी स्टैटिक बट सच एज द लॉस ऑफ अ लिम्ब ड्यू टू एन एम्पुलेशन, कोई एम्पुलेशन हुआ है, आपके एक लिम्ब आपने खो दी है, राइट. और की प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, इन विच अ पर्सन कंडीशन में डिटोरेट विद टाइम. कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली ऐसी प्रॉब्लम है जो कि समय के साथ बढ़ती चली जाती है. तो स्टैटिक है, स्टेबल है कि एक प्रॉब्लम है एंड दैट इज ओनली प्रॉब्लम दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, या फिर वो प्रोग्रेसिव है, टाइम के साथ, समय के साथ वो बढ़ती चली जाती है प्रॉब्लम, right. So the commonly known disabilities may include blindness, deafness, locomotor disability, चलने फिरने में प्रॉब्लम, देखने में, सुनने में, okay, mental retardation या cerebral palsy and mental illness, बहुत तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, right. Recently, autism and learning disabilities like dyslexia have also become more familiar. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सारी डिसेबिलिटीज में आती हैं. हम स्पेशली एबल्ड पीपल बोलते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, राइट. In legal documents and policy statements, disability is defined in terms of what qualifies for public assistance.
राइट। इन इंडिया द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये एक्ट आपको याद रखना है, राइट। 2016 2016 में ये एक्ट पास हुआ है, आइडेंटिफाइज 21 disabilities as compared to the earlier persons with disability act 1995 which identified only 7 categories। ठीक है, 1995 में जो एक्ट था उसमें सिर्फ 7 कैटेगरीज थी, और जो 2016 में एक्ट हुआ उसमें जो है 21 डिसेबिलिटीज को हाईलाइट किया गया। पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर मोस्ट नेग्लेक्टेड disempowered section of the population, right? And due to their marginalized status, they are denied the fundamental civil, political, social, economic rights, राइट। जो राइट्स दूसरों को मिलते हैं उनसे वो प्रॉपर पूरे राइट उनको नहीं मिलते। दे आर डिनाइड द फंडामेंटल सिविक पॉलिटिकल सोशल राइट्स, राइट, गारंटी टू द ऑल द सिटीजंस। द प्लाइट ऑफ, आप सोचिए कि जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया, एक तो लड़की ऊपर से विद डिसेबिलिटी, द प्लाइट ऑफ द वुमेन विद डिसेबिलिटी इज इवन वर्स since they have to face the double oppression of gender and disability। इसको डबल डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, राइट। डबल डिस्क्रिमिनेशन, डबल ऑपरेशन, डबल उनके ऊपर दबाव है, रिस्ट्रिक्शन है। जेंडर पहले कहेंगे लड़की है, ऊपर से विद डिसेबिलिटी। Indeed, not only the socially invisible category but the plight is worse than both men with disabilities। अगर कोई men है with disabilities, राइट, एंड अदर देन द नॉन डिसेबल्ड वुमेन, मतलब आप सोचो कि अगर मेल है उस वो डिसेबल है, फीमेल है वो डिसेबल नहीं है, तो भी वो मेल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो आप सोचो कि विद फीमेल विद डिसेबिलिटी उसकी तो कोई से नहीं है सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन इंडिया 2011, 26.8 million persons have form of disability in India, accounting to 2.11% of the total population, right? See, this is a disability, right? Of these, 15 million are men and 11.8 million are women. Thus, women constitute just above 44% of the persons with disabilities in India. This is believed to be a conservative figure as the census took into account only a limited number of disabilities. Using a wider definition, इसमें तो क्या है, limited number of जो है disabilities ली गई हैं, क्योंकि पहले हमारी disabilities कितनी काउंट होती थी, 7, उसके बाद 21 होनी शुरू हुई है। तो इसके ऊपर तो हमें कम डिसेबिलिटी वाले लोगों को कंसिडर किया है, वो जो अलग अलग और वैरायटी की डिसेबिलिटी है उसको तो कंसिडर ही नहीं किया गया। ओके, यूजिंग अ वाइडर डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी व्हिच इंक्लूड्स कंडीशंस लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स दैट 6% to 10% of the population suffers from identifiable physical or mental disability। That comes to over 70 million persons in India, right? And it should be noted that estimates of total number of persons with a disability in the country vary depending on definition of disability used, right? Disability की definition के ऊपर depend करता है कि हमने कौन कौन सी जो problems हैं उनको disability में consider किया है। Accordingly, we have collected, we have gathered the data, right? It should be noted that estimates of the total number of persons with disability in the country vary depending on the definition of disability use, degree of definition के ऊपर depend करता है, डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट पे डिपेंड करता है, सर्वे मेथोडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, वो मेजरमेंट जो करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, बट उनकी मेंटल स्टेट, उनकी अदर प्रॉब्लम्स को, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, HIV, एड्स, इंडस्ट्रियल इंजरीज, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्संस। ये सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिसेबल्ड पर्संस का जो काउंट है वो बढ़ रहा है। तो आप रीजंस लिख सकते हैं। As mentioned earlier, enhanced life expectancy has increased many-fold the incidence of old age-related chronic disease-induced disabilities worldwide as well। पूरे throughout the country ये जो disability है वो बढ़ती चली जाती है, नई नई problems आ रही है जिसको कि हम add करते चले जा रहे हैं, right? इसमें अभी I do not know और कितनी unidentified disabilities already exist कर रही हैं इस environment में। Now, इसमें क्या है, historically persons with disabilities they have always been regarded with a mixture of fear, horror, right, and almost if they were subhuman. They have been portrayed as freaks, helpless victims, and a lifelong burden for family and society. Even in religion mythology, negative traits have been attributed with you see form of deformity,
बीट मंथरा, right? The hunchback in Ramayana, or maybe Shakuni, the lame of the Mahabharata, indeed, right? Mantra, right? उसको vision का था problem, Shakuni, right? And then lame था वो. Indeed, the law of karma, right, decreed that being disablement को ये सोचा जाता है कि ये पनिशमेंट है, राइट? इसने पिछले कर्म इसके ऐसे थे, पुराने कर्म इसके ऐसे थे, जिसकी वजह से इसको इस जन्म में डिसेबल बनाया गया है, कर्मों का फल है, राइट? तो ये कंसिडर किया जाता है लॉ ऑफ कर्मा. तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं. इसमें एग्जाम्पल देनी है तो ये महाभारत के शकुनी की, रामायण में से मंथरा की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. Right, decreed that being disabled was punishment for past misdeeds. पुराने पुराने कर्म करें, past deed है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है. So constructions of the disabled by the non-disabled leads to the marginalization, disempowerment of the whole population group. At the same time, such negative stereotypes जो हमारे मन में है, उसकी वजह से जो लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. Passivity, dependency, isolation, low esteem, right? I mean, complete loss of initiative को अलग रखा जाता है. तभी तो हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम्स स्टार्ट हुए हैं कि सबको साथ में मौका मिले. उनके लिए अलग थोड़े ना स्कूल होंगे. CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. अब उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके कनेक्ट वहां से करिए एंड देन कम टू द गर्ल्स एजुकेशन एज वेल. गर्ल्स के साथ में जेंडर एंड डिसेबिलिटी. तो पिटी, सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ये सब पॉइंट्स आप हाईलाइट करिए. बिकम नॉर्मलाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज. उनके साथ तो होता ही रहता है, राइट? एंड इन इंडिया द डोमिनेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी इज दैट ऑफ पिटी. सबसे ज्यादा तो पिटी, तरस, दया, सिंपथी, राइट? ओहो बेचारा. This reflects in social policies which are based on charity and welfare, medical rehabilitation, rehabilitation including medical rehabilitation including distribution of assistive aids and appliances such as braces, crutches, hearing aids, etc. Special schools, vocational training in low end occupations, sheltered employment have been the pillars of the state policy for disabled right from the colonial period. ये सब चीजें तो ठीक है, उनको देते ही आ रहे हैं, उनकी हेल्प करते चले आ रहे हैं कि उनको ये चीजें प्रोवाइड कर दें, राइट? Furthermore, they have never been regarded as a politically significant group, and hence their issues and concerns have not been taken up seriously by the political class. उनके problems को ज़्यादा seriously नहीं लिया जाता आगे, as many of them are hidden away from public view, denied access to education, social experiences. They have not been able to come together in a big way and make their presence felt in public. आगे आने का मौका कम मिलता है, राइट? सबसे पहले शुरुआत करें घर से ही. घर में भी क्या होता है, देखो ऐसी फैमिली इमेजिन करिए जहां पर उनके पास पहले ही जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, राइट? उसके बाद में उनके पास खाने पीने का ही नहीं है मनी, 2 मील दिन के भी वो नहीं ले पाते. समहाउ इफ दे आर अर्निंग, फ्री एजुकेशन हो गया, बच्चों को भेजेंगे, न्यूट्रिशन देना है, तो उसके बाद में अगर कोई डिसेबल्ड है घर में तो उसको बोलेंगे तुमने क्या करना है पढ़ के, बैठो आराम से, कोई काम कुम सीखना है तो वो सीख लो, कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो लेट इट बी. वो डिसेबल को हर जगह पर दुत्कारा ही जाता है, राइट? सो आप इस चीज को आप वो हाईलाइट करिए. एंड थिंग्स बिगेन टू चेंज मार्जिनली आफ्टर 1981, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. देखिए कब से चला रहा था ये सब कुछ, और 1981 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, 1981 याद रखेंगे. When the issue of disability was opened up at the national level, the changing international climate focusing on human rights and empowerments of marginal groups impelled the government to make some policy changes. उनको कुछ पॉलिसी में चेंजेस करना होगा, such as reservation in educational institutes and employment. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिसेबल यानी स्पेशली एबल्ड के लिए कुछ रिजर्वेशन हो, आगे एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन हो. बट रियल प्रोग्रेस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट लेजिस्लेशन टू डिलीवर द प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस ओनली केम इन 1995 में आया विद द पैसेज ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट. ये आप याद रखेंगे. 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन कहा गया. बट कोशिश की गई ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे जाए, पर 1981 से शुरू हो गए. 1995 1995 में जो है वो एक्ट आया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट. अदर लेजिस्लेशन शून फॉलोड. उसके बाद और क्या क्या है, नेशनल कन्वेंशन फॉर
द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी 2006 में आया नेशनल कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी विच वाज आल्सो साइंड बाय इंडिया इन 2007 में इंडिया ने साइन किया नेशनल कन्वेंशन जो हुआ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी यूनाइटेड नेशंस का है, तो इंडिया ने उसको साइन किया, राइट। पहले भी हमने फीमेल एजुकेशन में पढ़ा ना कि ऐसे ही कुछ कन्वेंशंस होती हैं, फॉर्मली उनको रेटिफाई करते हैं, साइन करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, लेट वी विल आल्सो फॉलो, वी विल आल्सो रिकमेंड। दिस signaled the introduction of a view of disability of a human right and development issue rather than simply a matter of charity and welfare, right? Introduction of a view of disability as a human right and development issue, right? कोई charity नहीं, कोई welfare नहीं है, this is a right. The Rights of Person with Disability Act 2016 recently जो हुआ है, which has now replaced the 1995 Act, is in line with this view, right? फिर उसके बाद में उसको रिवाइज कब किया, 1995 वाला, in 2016. Several disability rights groups and NGOs have emerged in recent times, and disability-related issues are being increasingly included in curricula of educational institutions. Curriculum में भी ये सब चीजें include की जाती हैं ताकि पढ़ें, हम भी उसके बारे में समझें, जानें, right? कि children with special needs जो हैं, उनकी क्या rights हैं, right? उनके लिए क्या provisions हैं in our constitution, वो सब चीजें include की जाती हैं. And now हमारा जो मेन टॉपिक है, डिसएबिलिटी एंड जेंडर, द प्लाइट ऑफ वुमेन विद डिसएबिलिटीज, एज अर्लियर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, इज फार वर्स than that of men, as they suffer on account of being a woman in the male dominated society and disabled in the world which considers a healthy able body as ideal, जिसमें कंसिडर किया जाता है कि हेल्दी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है, सारे अंग पूरे हैं, मेंटली स्टेबल है, तो उसको आइडियल माना जाता है, राइट? एक तो गर्ल और ऊपर से with disability. How a person with disability experiences the condition and is perceived by others is largely dependent on whether she or he is a male or a female. For instance, there is one example like point out that women with disability experience sexism without a pedestal. They are doubly disadvantaged, right? And not only do they experience disability linked with discrimination, but they experience sexism and are denied the consideration and social status that non-disabled women may claim as wives and mothers. Men with disabilities also experience a similar result. Men को भी होता है, but women को ज़्यादा होता है, on the masculinity and maybe shamed or bullied, not being man enough, or on their like dependent on the burdens on the family समझा जाता है. This can be very bruising, damaging to the self-respect, as traditionally men are expected to be the providers and the decision makers of the family. देखो पहले के patriarchal society है, men को क्या समझा जाता है कि bread and butter family के लिए ये अर्न करता है, और ऊपर से अगर सोचा जाए कि ये उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये डिसेबल है, तो उसके लिए और प्रॉब्लम, राइट? उसको नहीं समझा जाता कि हाउ विल ही शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली, कैसे करेगा, कैसे होगा। ऊपर से अगर फीमेल हो गए तो उसके लिए भी अगेन देन उसके रिप्रोडक्शन ये आगे बच्चों के लिए, ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम्स आती है, कंस्ट्रेंट्स सोसाइटी पैदा करती है, राइट? एक्चुअली और तो रियलिटी में तो नहीं होता कुछ, बट सोसाइटी उनको ऐसा कॉन्फिडेंस उनका इतना लो, उनकी एस्टीम इतनी लो कर देती है, दे आर नॉट एबल टू कम अप. So you talk about the effect of society. इसलिए कहते हैं disability in the social sense, right? And as mentioned earlier, 2011 census estimates that there are over 11 million women, 11 point something हमने पढ़ा था, right? In with disability in India. 4% of the population क्या है? Gender with disability. Some researchers estimate that there are over 35 million women with disability in India. Others put a figure of 20 million. 98% of the disabled, देखिए 98% of the disabled are illiterate. Disabled जो हैं उनको मौका ही नहीं मिलता आगे पढ़ने का. तो अगर 35 million, right, 11 million women और maybe 4% of the population, हमारी population का 4% हिस्सा
जो है वो डिसेबल है, वीमेन, एंड उनको मौका नहीं मिलता पढ़ने के लिए. ओनली 1% कैन अवेल द हेल्थ केयर एंड rehabilitation services. But these statistics are only the tip of the iceberg when it comes to gauging the level of neglect, isolation, stigma, and deprivation, the characteristics that characterize their lives. The majority of women with disability in India suffer the triple discrimination of being female, being disabled, being poor. Right? पहले तो हम डबल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे. नाउ इट इज ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन. एक फीमेल है, डिसेबल है, पुअर है. राइट? And now marriage and family life. A disabled woman is considered incapable of fulfilling the normative feminine roles of homemaker, wife and mother. ये सोचा जाता है. Considered. Then she also doesn't fit the stereotype of a normal woman in terms of physical appearance. जो सोचा जाता है कि girl should be like a fairy, beautiful, पता नहीं क्या क्या synonyms उसके लिए. Look at the matrimonials where it is written we want a girl looking like a fairy, ये वो something, इतनी सारी expectations हैं, beautiful match something, right? So physical appearance की जब बात होती है उसमें भी उसको बुली किया जाता है. सिंस वीमेन एम्बॉडी फैमिली ऑनर, डिसेबल्ड गर्ल्स आर केप्ट हिडन एट होम. सोचा जाता है कि इसको छुपा के रखें, बताएं नहीं, ताकि हमारी फैमिली के ऑनर को, नाम को कुछ कोई खराबी ना हो जाए. राइट? एंड डिनाइड, छुपा के रखेंगे तो स्कूल में नहीं भेजेंगे. डिनाइड बेसिक राइट्स टू मोबिलिटी, आसपास कहीं जाना नहीं है, पढ़ने नहीं जाना है, जॉब के लिए नहीं जाना है. एंड दे आर लेस लाइकली टू बी गिवन इन मैरिज देन डिसेबल्ड मैन. ओके, कई बार शादी भी नहीं होती है, हो जाती है तो या तो विडोअर से होती है, या तो ऑलरेडी किसी का कोई डिवोर्सी है या समथिंग लाइक दैट, ऐसे होता है. दे आर वेस्ट लाइकली टू बी गिवन द मैरिज एंड डिसेबल्ड मैन. द कैपेसिटी ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी टू बी सेक्सुअल पार्टनर्स, होम मेकर्स, मदर्स इज क्वेश्चनड एंड डाउटेड. इसके ऊपर हमेशा एक question mark लगा होता है. They are not considered capable of performing household chores efficiently, having meaningful sexual relationships or producing and rearing healthy children. इसके ऊपर again there is a question mark by the society. Under these circumstances, they may be married off to older, already married men. Men in these circumstances, right? And maybe men in the poor health, जिसकी health problem है, उसके साथ शादी कर देते हैं. In short, women with disabilities do not have the same options of marriage and motherhood as non-disabled women. Being nurturing and caring are important aspect of female identity and cultural expectations of proper womanhood, but women with disabilities are themselves in a need of care. Thus, they are not regarded as complete women. They are not regarded as complete women. अब आप देखोगे, देखिए हम अपने आसपास देखे, हो सकता है आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर कि women with disability को मौका दिया जाता है आगे और प्रमोट किया जाता है, but they are very rare cases. If we talk about rural India, right, and even the urban, ठीक है, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, but everybody is not like that, right? Now, violence and abuse, being powerless, क्या समझा जाता है? Powerless है. पहली बात तो फीमेल को वैसे समझा जाता है, powerless है. डिसेबल है तो बिल्कुल ही उसको कुछ नहीं. Isolated, anonymous, कोई आइडेंटिटी नहीं है. Women with disability are extremely vulnerable to abuse and violence. Right? In addition, help in activities of daily living like dressing, eating, other bodily activities make them more vulnerable to abuse both at home and in institution. कि उनको help लेनी पड़ती है दूसरों की किसी काम के लिए, something like that, and she'll be less able to defend herself in the risky situation because she may not be able to run or shout for help. Then persons with developmental disabilities may be too trusting of others and hence may be easier to trick, bribe. क्या होता है कि जो जिनकी कुछ
दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली कुछ ऐसे है, डेवलपमेंटल किसी की डिसेबिलिटी है, जल्दी से दूसरों के झांसे में आ जाते हैं, राइट? तो फिर वो भी उनकी प्रॉब्लम है, उनका फ़ायदा उठाया जाता है। दे मे नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन गुड टच, बैड टच। ये हम बच्चों को सिखाते हैं छोटे-छोटे, गुड टच, बैड टच, राइट? उनका फ़ायदा उठाया जाता है, उनको समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इतना सोच नहीं सकते, जल्दी डिसीज़न नहीं ले सकते, राइट? So many cases are known for mentally or intellectually disabled girls and women who are sexually abused by people responsible for their safety and care because they are sure that the victims will not be able to report, right? वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी इतनी समझ नहीं है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी इतनी एस्टीम नहीं है, and the abuser can escape scot free. Persons with speech and hearing difficulties may have limited communication skills to report or abuse. जब communication skills ही नहीं efficiently कर पाते, right? Problem है. Furthermore, since disabled persons are often taught to be, उनको क्या कहा जाता है? Obedient होना चाहिए, passive होना चाहिए, to control their behavior. This may take them easy victims. This may make them easy victims, right? एक victims बन जाते हैं. अगर हम बात करते हैं physical access and mobility, women in general in our country find it difficult to move freely from one place to another, right? चाहे काम के लिए हो, लेजर के लिए हो, अलाउड नहीं होता, परमिशंस लेनी पड़ती हैं. So we can well imagine the condition of a woman with disability. जो अच्छी खासी वुमेन चल फिर सकती है, पढ़ी लिखी है, इवन परमिशन लेनी पड़ती है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, बताना पड़ता है 4 लोगों को, घर के मेंबर्स को, राइट? तो जब तक सबकी अप्रूवल नहीं हो, तो यू कैन नॉट गो. तो डिसेबिलिटी वाली तो कहीं नहीं जा सकती. पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंडीशन, बैड रोड्स, नो रोड्स, सेफ्टी इश्यूज, लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग, सेफ्टी ऑन द स्ट्रीट्स, it makes very difficult for the women with disability to move from one place to another, right? तो ये mobility की बात आ गई. You may have seen women with disability in public places facing great hardships because of the environment जैसा बना हुआ है, toilets, restrooms proper नहीं है, conditions in public buses, railways, they are not favorable for them. तो घर वाले कैसे भेजेंगे बाहर? हर एक के पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं भी होता ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कैसे करेगी, ये जाएगी कैसे, कौन बिठाएगा, कौन कैसे करेगा? So that is again a problem. Lack of proper toilet facilities is the major problem. Public toilets, they are filthy, unhygienic, usually they're the ground level, usually of the Indian style, making it very difficult for the locomotor disabled women who often get around by crawling on all fours. Many women with disabilities have narrated their experience of not eating food, even drinking water for long periods while they are out of the house for fear that they may need to use the toilet. My God, I mean, see, such a plight, right? कि कुछ खाएं नहीं लॉन्ग पीरियड तक कि वॉशरूम ना जाना पड़े. कैसे जाएंगे? हाउ वी विल मैनेज व्हेन वी आर आउट? वी नीड सपोर्ट, वी डोंट हैव प्रॉपर वॉशरूम्स, राइट? एंड दिस हैज अ बैड इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, ऑब्वियसली होगा. एंड मेनी सच गर्ल्स, दे नेवर गेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जब स्कूल ही नहीं जाएंगे, फ्रेंड्स ही नहीं बनेंगे, रिलेटिव्स के पास नहीं जाएंगे, नेबर्स के पास नहीं जाएंगे, देन डिप्रेशन हो जाता है, आइसोलेशन, वर्थलेसनेस, लगता है कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है. You mention all these points when you talk about gender and disability, education, training and empowerment. Many disabled girls, they never go to school. There is a lot. हमने पढ़ा अभी 4% पूरी population का है फीमेल विद डिसेबिलिटी, राइट? और उसमें से 1% या 2% ऐसे हैं जो जाते हैं स्कूल में, बाकी 98% इलिटरेट, स्कूल ही नहीं जाने का मौका मिलता. देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू देयर कंडीशन एंड फैमिलीज मे वांट टू हाइड देम फ्रॉम आईज ऑफ द वर्ल्ड फॉर फियर ऑफ bringing a bad name to the family, affecting the marriage chances of the other girls in the family, राइट? एंड स्पेशल स्कूल्स और वोकेशनल सेंटर्स में भेजना है, वो दूर होते हैं, इक्विप्ड होते हैं, पैसे शायद ज्यादा भी पेमेंट कई बार करनी पड़ती है, वो नहीं कर सकते. सेंटर पे में बर्डन ऑन द फैमिली समझा जाता है, भार. लैक ऑफ हॉस्टल फैसिलिटीज, क्योंकि हर रोज कम्यूट नहीं कर सकते तो हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है. प्रॉपर केयर, इफ सच हॉस्टल्स एग्जिस्ट फर्दर, हॉस्टल भी होते हैं तो प्रॉपर सेफ नहीं होते हैं, राइट? तो उसके लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाती है. Many families consider disabled daughters to be unfit for education and are willing to invest in the money for the purpose because the girls are already considered a burden. मेरे पहले ही burden है, इसके ऊपर और हम पैसा क्यों खर्च करें,
Needless to say, women with disabilities also find it very hard to secure employment because of their lack of education and training, right? And this poses a serious problem for the future, especially after their parents die, leaving them without financial support, right? और इंडिपेंडेंस, वो भी चले जाते हैं, उनके लिए देखने वाला कोई नहीं होता. Girls and women with disabilities may suffer from several health problems हो सकती हैं उनके लिए, which may be related to their disability, which may require prolonged and costly medical care, right? Occupation therapy, physiotherapy, special diets, assistive devices like hearing aids for the deaf, wheelchairs, or maybe artificial limbs for those with the locomotor disabilities may prove prohibitively expensive for the poor families. नहीं afford कर सकते. Women find it very humiliating when they go for health checkups because health professionals often treat them in an insensitive or callous, cruel way. Many women neglect their health because they don't want to burden their families anymore. वो अपना ध्यान ही नहीं रखती, burden नहीं करना चाहती, consider करती हैं कि हम तो worthless ही हैं, right? And health is directly related to nutrition and good quality of life. Many women with disability also suffering from poverty and neglect do not get adequate nutrition, fresh air, exercise, and a wholesome atmosphere in which they can be healthy. Girls and women with disability are often confined within the house. चार दीवारी के अंदर बंद रखते हैं, right? कि they'll bring bad name to the family, to their home. बाकियों की शादी कैसे होगी और लड़कियां हैं घर में, I mean blah blah blah, religious ceremonies and all. उनको थोड़ा दूर रखा जाता है, right? And the leisure activities like going out for a meal or for a film become potentially embarrassing. कि बाहर कहीं खाने पे जाना है, किसी के घर में जाना है, तो इसको घर में ही छोड़ कर जाते हैं. मूवी के लिए जाना है, बाहर जाना है, कहीं पर भी, let her stay at home. ठीक है? तो हर जगह पे रैंप नहीं होगा, लिफ्ट नहीं होगा, कैसे लेके जाएँगे? हाउ टू टेक केयर, हमने यहाँ जाना, वहाँ जाना, कहाँ-कहाँ लेके जाएँगे? तो बर्डन समझा जाता है. Thus, we see that women with disability face violations of their rights at every level. They are considered as financial burden, social liability for the families. They are denied opportunities to move outside the home, right? They don't have access to education. They are viewed as asexual, helpless, dependent, right? And their vulnerability to the physical, sexual, emotional abuse is enormous. Their aspirations for marriage and parenthood often denied. They grow up isolated, neglected within the walls of the home and special institutions with no hope of the normal life. Right? So you talk about that. और इसके लिए और क्या है? Although rights-based approach has entered the disability rights movement, the specific concerns for women with disability have not yet found a place neither in the government policies में नहीं है, programs में, right? Ironically or expectedly, the disabled rights movement all over the world, including India, is male dominated. It may even be bluntly sexist. Even within the women's movement, women with disability rarely figured as a distinct group in international, right, conversations. However, the Beijing Declaration in 1995, Platform for Action, specifies women with disabilities as a particularly vulnerable group with little access to information on their fundamental rights. This is a serious lacuna which needs to be rectified at various levels. One of the most important features of the United Nations Convention on the Right of Persons with Disabilities, which was passed by General Assembly in 2006, is incorporation of a separate article on women with disabilities. Being a signatory to the convention, Indian state is henceforth duly bound to incorporate a gender perspective in all its policies. सारी पॉलिसीज में उनको जेंडर परस्पेक्टिव को कंसिडर करना होगा. इंडिया ने ये साइन किया है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, which was passed in जनरल असेंबली इन 2006 में जो पास हुआ था, साइन किया. इसलिए हर उसके पॉलिसी में, प्रोग्राम में उनको जेंडर पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली उसको पॉलिसीज बनानी है. इन अ डिसेबिलिटी सेक्टर, द न्यू डिसेबिलिटी एक्ट does make reference to women, particularly with regard to access to sexual reproductive health care. However, there remains much to be done on the ground to ensure that women with disabilities access their rights. Now, disability is a universal human condition, and we all only temporarily abled bodies.
The notion of disability as a tragedy or a medical anomaly has been challenged by scholars who view it as a social and biological condition. Discriminatory social attitudes and denial of basic rights to person with disability has made them weak. वो weak क्यों हैं? अपनी disability की वजह से weak नहीं है. वो weak हैं क्योंकि उनको weak बनाया गया है. They have been made weak. They have been made powerless, made isolated throughout the history. The condition of women with disability has been particularly difficult. Hai. They have faced discrimination, marginalization in all the aspect of the life. Marriage, family, लाइफ टू मोबिलिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, लेजर, कोई भी फील्ड हो, आप सब फील्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, घर में पहले तो बर्थ के टाइम पर, फिर रेयरिंग के टाइम पर, अपना ब्रॉट अप, देन उसके बाद में शादी है, बच्चे हैं, एजुकेशन, वो सारे हर एक फील्ड में आप बात कर सकते हैं. However, the new rights-based approaches and international policies that have been introduced over the past few years have created greater awareness. Awareness हो रही है, but बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है. Disability has also become a topic of right, all these is written at interest in popular cinema. ठीक है, वहाँ से भी हाईलाइट किया जाता है क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करनी है. All these developments will hopefully lead to better understanding of the situation. समझ पाएंगे, शायद कोई solution निकल पाए together if we work, right? So make sure you go ahead with that. All of you, fine, all the best. Attempt this paper well. Thank you.